अथ श्रीडाकिनी स्तोत्रम् आनन्दभैरवी उवाच अथ वक्ष्ये महाकाल मूलपद्मविवेचनं यत्कृत्वा अमरो भूत्वा वसेत् कालचतुष्टयम् अथ षट्चक्रभेदार्थे भेदिनी शक्तिमाशयेत् छेदिनीं सर्वग्रन्थीनां योगिनीं समुपासयेत् तस्या मन्त्रान् प्रवक्ष्यामि येन सिद्धो भवेन्नरः आदौ शृणु महामन्त्रं भेदिन्यः परं मनुम् आदौ कालीं समुत्कृत्य ब्रह्ममन्त्रं ततः परं देव्यः प्रणवमुद्धृत्य भेदने तदनन्तरं ततो हे मम गृह्णीयात् प्रापय द्वयमेव च चित्तचञ्ची शब्दान्ते मां रक्ष युग्ममेव च भेदिने मम शब्दान्ते अकाल मरणं हर हर युग्मं स्वं महापापं नमो नमो अग्निजायया एतन्मन्त्रं जपेत् तत्र डाकिनी रक्षसि प्रभो आदौ प्रणवमुद्धृत्य ब्रह्ममन्त्रं ततः परं शाम्भवेते ततश्चोक्त्वा ब्रह्मणेति पदं ततः मनोनिवेशं कुरुते तारयेते द्विधा पदं छेदिने पदमुद्धृत्य मम मानस शब्दतः महान्धकारमुद्धृत्य छेदयेते द्विधा पदं स्वाहान्तं मनुमुद्धृत्य जपेन्मूलम्बुजे सुदे एतन्मन्त्रप्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः तथा स्त्रीयोगिने मन्त्रं जपेत् तत्रैव शङ्कर ॐ घोररूपिणी पदं सर्वव्यापिनी शङ्कर महायोगिनी मे पापं शोकं रोगं हरेति च विपक्षं छेदयेत्युक्त्वा योगं मय्यर्पय द्वयं स्वाहान्तं मनुमुद्धृत्य जपाद्योगी भवेन्नरः खेचरत्वं समाप्नोति योगाभ्यासेन योगिराट् डाकिनीं ब्रह्मणा युक्तां मूले ध्यात्वा पुनः पुनः जपेन्मन्त्रं सदा योगे ब्रह्ममन्त्रेण योगवित् ब्रह्ममन्त्रं प्रवक्ष्यामि तज्जापेनापि योगिराट् ब्रह्ममन्त्रप्रसादेन जडो योगेन संशय प्रणवत्रयमुद्धृत्य दीर्घप्रणवयुग्मकं तदन्ते प्रणवत्रीणि ब्रह्म ब्रह्मत्रयं त्रयं सर्वसिद्धे प्रदस्यान्ते पालयेति च मां पदं सत्वं गुणो रक्ष रक्ष माया स्वाहा पदं जपेत् डाकिनी मन्त्रराजं च शृणुष्व परमेश्वर यज्जप्त्वा डाकिनी वश्या त्रैलोक्यस्थितिपालकः यो जपेत् डाकिनी मन्त्रं चैतन्यकुण्डली झटित् अनायासेन सिद्धिः स्यात् परमात्मा प्रदर्शनं मायात्रयं समुद्धृत्य प्रणवैकं ततः परं डाकिन्यन्ते महाशब्दं डाकिन्यम्ब पदं ततः पुनः प्रणवमुद्धृत्य मायात्रयं ततः परं मम योगसिद्धिमन्ते साधयेते द्विधा पदं मनुमुद्धृत्य देवेशे जपाद्योगी भवेज्जडः जप्त्वा सम्पूजयेन्मन्त्रे पुरश्चरणसिद्धये सर्वत्र चित्तसाम्येन द्रव्यादि विविधानि च पूजयित्वा मूलपद्मे
चित्तोपकरणेन च ततो मानसजापं च स्तोत्रं च काले पावनं पठित्वा योगिराट् भूत्वा वसेत् षट्चक्रवेश्मनि शक्तियुक्तं विधिं यस्तु स्तौते नित्यं महेश्वर तस्यैव पालनार्थाय मम यन्त्रं महीतले तत्स्तोत्रं शृणु योगार्थं सावधानावधारय एतत् स्तोत्र प्रसादेन महालयवशो भवेत् काले पावन स्तोत्रम् ब्रह्माणं हंस संघायुत शरणवदा वाहनं देवभक्त्रं विद्यादानैक हेतुं तिमिचरनयनाग्निन्दुफुल्लारविन्दं वागेशं वाग्गतिस्थं मतिमत विमलं बालार्कं चारुवर्णं दाकिन्यालिङ्गितं तं सुरनरवरदं भावयेन्मूलपद्मे नित्यां ब्रह्मपरायणां सुखमयीं ध्यायेन्मुदा डाकिने रक्तां गच्छ विमोहिनीं कुलपथे ज्ञानाकुलज्ञानिने मूलाम्भोरुहमध्यदेशनिकटे भूबिम्ब मध्ये प्रभा हेतोस्थां गतिमोहिनीं श्रुतिभुजां विद्याम्बवाल्लादिनीं विद्यावास्तवमालया गलतला प्रालम्ब शोभाकरा ध्यात्वा मूलनिकेतने निजकुले यस्तौति भक्त्या सुदे नानाकार विकार सार किरणां कर्त्रे विदो योगिना मुख्यां मुख्य जनस्थितं स्थितिमतिं सत्त्वाशितामाशये या देवेन वडाकिने स्वरमणे विज्ञानिने मोहिने मां पातु पिरयकामिने भवविधेरानन्द सिन्धुद्भवा मे मूलं गुणवासिने प्रचयतो शेकेति चक्रं हिमा नित्या सिद्धि गुणोदया सुरदया श्रीसंज्ञया मोहिता तन्माद्ये परमा कला कुलफला बाणप्रकाण्डाकरा राकाराशशा शशिघटा लोलामला कोमला सामातानवमालिने मम कुलं मूलाम्बुजं सर्वदा सा देवी लवराकिने कलिफलोल्लासैकबीजान्तरा दात्रे धैर्यवते सते मधुमते विद्यावते भारते कल्याणे कुलकन्यकाधर नरा रूपा हि सूक्ष्मास्पदा मोक्षस्था स्थिति पूजिता स्थितिगता माता शुभा योगिना नौमे श्रीभविकाशयां शमनगां गीतोद्गतां गोपनां कल्केशीं कुलपण्डितं कुलपथा ग्रन्थे क्रियाच्छेदिने नित्यां तां गुणपण्डितं प्रचपलां मालाशतार्कारुणां विद्यां चण्डगुणोदयां समुदयां त्रैलोक्यरक्षाक्षरा ब्रह्मा ज्ञाननिवासिनीं शितशुभानन्दैकबीजोद्गतां गीतार्थानुभवप्रियां सकलया सिद्धप्रभा पाटलां कामाख्यां प्रभजामि जन्मनिलयां हेतुप्रियां सत्क्रियां सिद्धौ साधन तत्परं परतरं साकाररूपायितां ब्रह्मा ज्ञानं निदानं गुणनिधिनयनं कारणानन्दयानं ब्रह्माणं ब्रह्मबीजं रजनिजयजनं यागकार्यानुरागं शोकातीतं विनीतं नरजलवचनं सर्वविद्याविधिज्ञं
सारात् सारं तरुं तं सकलतिमिरहं हंसगं पूजयामि एतत् सम्बन्धमार्गं नवनवदलगं वेदवेदाङ्गविज्ञं मूलाम्भोजप्रकाशं तरुणरविशशि प्रोन्नताकारसारं भावाख्यं भावसिद्धं जय जय दविदिं ध्यानगम्यं पुराणं पाराख्यं पारणायं परजनजनितं ब्रह्मरूपं भजामि डाकिने सहितं ब्रह्मा ध्यानं कृत्वा पठेत्स्तवं पठनाद्धारणान् मन्त्रे योगिना संगतिर्भवेत् एतत् पठनमात्रेण महापातकनाशनम् एकरूपं जगन्नाथं विशालनयनाम्बुजम् एवं ध्यात्वा पठेत् स्तोत्रं पठित्वा योगिराट् भवेत् इति श्री रुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपने सिद्ध मंत्र प्रकरणे षट्चक्र सिद्धि साधने भैरव भैरवी संवादे डाकिनी स्तोत्रम संपूर्णम्।